The greatest morning routine of all time, in my opinion, Diego Maradona. Looking at it, bro, we gotta go ahead and get in at least 10,000. Broke people deserve death penalty. And like a year ago now from now, bro, like I was gambling like a motherfucker. Man, I'm not even gonna watch this shit, bro. अब मुझे 9:30 पे काम करना है, उसके लिए मैं 5 AM को भी उठूं. Okay now, look, मुझे बताने की it's about to be 700 million now, okay? And we're not gonna watch this doo-doo thing right now because I bet we all have seen it more often than not. You know, in the past few months. क्योंकि ये तो मैं 1-2 महीने से मैं इसका ये पेज जान रहा हूँ. Even then, बहुत ही ज़्यादा इसके इंस्टाग्राम पे वो था ट्रैफिक ब्रो. 4:45 bro. 5:30 तक मतलब look if you sit down and you know what I mean like find all the stupid things he's doing in this only a minute and a half video, you will easily be able to talk about this motherfucker for like 20-30 minutes, okay? Because all this stuff he's doing is really intentional. All right, 7:52, and the hardest part is about to come right now. Banana on your face. So looking at it, bro, we gotta go ahead and get in at least 10,000. Man, this fucking guy. You even know how much is 700 million of eyeballs on you, bro? That's like 1.4 billion eyeballs on you, bro. That's a lot, my brother. You know, that's the feeling Ronaldo and Messi be feeling. And even these political leaders, you know. But this is, yeah, but you know, this is purely, yeah, okay, the 15 minutes or 15 seconds of fame type shit. You know, and you all see all these funny ass videos and shit. You know what I mean? Face in the bowl all the fucking time. या ये भी फनी था ना कि 4 मिनट तक वो हम वरना अगर निकालने जाएगा इंसान तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी. But what was cool is I found this account called Dalvis, इसे pronounce करेंगे I guess. This dude hired me in 2023 to consult for his brand. He's so broke and stupid. We all know that type shit. बहुत ज़्यादा मेहरा करके nonchalantly replies कर रहा था तो this got my attention. This retweet in itself has 100 million views, bro. You know what I mean? And if you look at his posts and shit, you will look that this guy was on some yes sir can you send the payment or payment मांग रहा है and then he's like क्यों पेमेंट दूँ रे मतलब यार नेगेटिव इन्वेस्टमेंट होगा लवड़ा लहसुन है ना. ये बात तो है यार, ये लोग फ्रीलांसर लोग ना इतना फटफट पेमेंट मांगते हैं ना ब्रो कि लवड़े तू कुछ किया क्या है यार. Honestly, if some freelancer might be doing this, you know what I'm saying, they would feel to be on my ass, but ऐसा मैंने देखा है कई दफा ब्रो कि तूने किया क्या लवड़े कि तू फटाक से पैसा मांग रहा है ना. Anyway, you know what I mean, sounds good. You have any files or new screens, clean half dozen, like, you know, can you get the invoice sorted please, and then you can secure the, basically is acting like a middleman, okay? Would be like a flat print would look like, you know what I'm saying, the main pieces of the collection, daily reminder he be sending. I dropped him as a client after the first month, by the way, okay? Links up his Instagram and shit. You know, we can clown the guy, but to reveal these secrets is so messed up. Legit no reason for this is messed up and unprofessional. I don't care. Look at his replies and shit. I don't care. I'm happier than him. And now he's above you, lama, broke ass nigga. Worried about the past. I'm happier than him. Is this a cope? I do think so. You're a cloud chaser begging people to buy our t-shirt for $5. Mock-ups. I hate corny unemployed social media flops like you have no purpose. And he's just trying to raise her up. I saw her account, damn, she ain't even that pretty, bro. You know what I mean? There is no rules, no return, anything to do, but it doesn't matter. Yeah, basically they were, you know, like getting on Dalvis to be like, tu sare iske secrets lauda sun bata raha hai. We all know how this guy is, bro. Like, this is all, you know, fake shit. You know, he's not even showing the injection he's sticking up his ass either, bro. You know what I mean? Like, crazy, dog, crazy. And yeah, this guy shed some light as well. ये तो मुझे पहले से पता ही था कि ये है ना, this is just some bullshit, but nice to see someone actually who was involved in it to be like you know, talking about shit. Look at this motherfucker. Isn't it obvious he's a content creator? What if he's broke? What's the problem? Broke people deserve death penalty.
Man, people be saying anything on the internet. Why would you share something like this? Because I don't care, I'm sexy, man. I don't even, I haven't even seen this guy's face. But बहुत ज़्यादा महला रहा था मुझे तो बहुत गुस्सा आया bro. Fuck. But nice post to see, you know, what's up, what's going on the inside. We already knew all this shit, but nice to see it, you know what I'm saying? कि पूरी तरीके से इसे देखना कि क्या हो रहा है असल में. And you know, plenty of memes have been made as well. Basketball खेल रहा है ना? वो लेट वेट की कर रहा है, खाली दिखा रहा है साइड में जैसे सीरियल में दिखाते हैं. पानी पिलाया. वाटरमेलन खिला रहे हैं ऐसे, है ना? And yeah, now going on some, these are, you know what I mean, like less eye-catching and whatever type shit. But look, bro, all the other stuff now, like this shit is not even true either, bro. Look at this. 4MG wakes up and shit, right? 4-3 is doing a little something, brushing and shit. Alright, I see you. I see you. Alright. Man, I'm not even gonna watch this shit, bro. It's just internet is filled with this bullshit, bro. Internet is filled with this bullshit, you know? It is crazy guy. ना ये तो हम सब ने देखा है. ये उठ के अगर बिस्तर को अपने ठीक कर रहा है, bro. फरेरो से रखा. Impressive physique though, na? Nice meal and everything. This is bullshit though, bro. ये उठ के भेंचूद साफ सफाई कौन करेगा सबसे पहले काम यार. This was crazy too. ये भी देख के मेरा खून खोला. ठीक है, ये 5:30 को उठ रहा है, which is alright. Alright, make bed. Okay, इसको 1 मिनट लगा. This guy is also, you know, doing the face eyes, but this was 11 weeks ago. Why do I always moan? That's true. Why is this motherfucker always moaning, bro? Get dressed and shit. Alright, I see you. Start a 10-minute timer. Man, इतना गुस्सा आ रहा है देख के सब. But I'm still watching it. इसका देख लेते हैं, लड़की का अपन ने skip किया. Stretch and massage. Head out, you know, go to the gym. I mean, all this shit is stupid, bro. Alright, back home. Guys, I was mourning as well. Shower, get dressed. 8 a.m. Protein. है ना? Quick clean up 8:10. यार ये सारी चीजों का ऐसा सीन है ना, इतना देर उठ के क्या करना ब्रो, फिर नींद आने लग जाएगा ऑनेस्टली. गुड थिंग दिस गाइस ड्रिंकिंग कॉफी. सो कम्यूट किया अपने यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, 5 मिनट तो कम्यूट किया इसने. वर्किंग मैन, सो retarded bro. 2 o'clock in the 2 a.m. in the morning. This was something that I found like, you know, okay, that's reasonable. Okay, 2 kids है इसके पास, बेचारे के पास. I didn't really saw her mom though. Saw those are 2 guys' mom. Like, why is he doing all this stuff alone in the morning? बहुत महला रहा है पर ये ना. Why are you dancing, bro? Can't just be like how you normally are. I doubt this motherfucker must be like this, bro. 4 a.m. को उठ कर कितना जोर जोर से हंस रहा है. Look at that motherfucker, man. Come on now, bro. This was a little commendable, a little appreciative, but of this video I was. But एक तो भाग कैसे रहा है, and the amount of dancing this motherfucker is doing was getting on my nerve, bro. Good physique, really good physique, by the way. Okay, 6'10", looking at the kids, how they're sleeping and stuff. Okay, fold किया कपड़े. This is reasonable. Okay, this is good, right? Yeah. It is good.
राइट 7:45 खाना वाना खिला रहा है मेरा एक और देखो ना डांस कर रहा है अभी स्टॉप इट ब्रो राइट ओके ही इज डूइंग बट ये भी बोले ना क्या कर रहा है लावड़े तू some some memes this was pretty cool to be honest 3:53 pm को ready ऐसे नीचे करा के मुंह धो रहा है हॉट डॉग सीधा 2 किलो केचप डाल के रोड में वेट कर रहा है 4 मिनट हुआ ठीक है इसी बार में खा लिया अब 61 हो चुका है लिया पानी वो वाला इसका मुश्तंडा आया आइस गिराया सैरी पे मार दिया अपने पिंक Want to slam your entire 401k on a 16-leg parlay. Yep. Yeah, this is funny, bro. I got bad news about your parlay. And I see. Nothing? What about the kids' college funds? This is good, man. This is good. 682. Seven 24, 6 a.m. हो चुका है अगला दिन अभी पड़ा हुआ Yo, this was funny, huh? This was funny. This is funny. But now, okay, to end this motherfucker up, the greatest morning routine of all time, in my opinion, with one of the greatest of all time, Diego Maradona. 650. ¿Dónde están en ¡Ay, minuto! ¡Eso es! Ah. This is Diego Maradona, bro. ¡Vale! Sí, a ver. Oh, ¡Vale! ¡Hola! ¿Qué hola? he's saying Wally, ¿no? ¡Vale! ¿Qué hizo así la pelota? Yeah, I need to learn Spanish, bro. La compañía de los choclos. मस्ती करो अभी. This was a morning routine, bro. This was a morning routine. This is cinema, है ना? Rest in peace, legend. Yeah, rest in peace, legend. Diego motivates me to go to work on a holiday. True, bro. If I were Maradona, I would live like him. That was a morning routine, wasn't it? And this bullshit, bro. Morning routine से याद आया. Let me talk about my morning routine, okay? फिलहाल कैसे चल रहा है? सबसे खतरनाक तो लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम मुझे याद आया आईपीएल चालू होने की वजह से क्या था सुबह उठता था मैं फुटबॉल तो आते ही रहता है तो कभी कभी सोता है इंसान 4 बजे ठीक है जैसे कि अभी पोर्टुगल वाला मैच में लास्ट येस्टरडे देख रहा था 4 बजे में सोया था 8:30 बजे तो उठना क्योंकि 9:30 9:45 को ट्रेड करना है ठीक है तो उठो कॉफ़ी पियो फटाक से ठीक है एंड क्या बोलते हैं मुंह दो मम्मी पापा से बातचीत करो ठीक है फिर उसके बाद 9:45 हुआ 9:45 से मैक्सिमम डेट चलता है 3:20 तक ठीक है लेकिन उसके पहले भी खत्म हो जाए तो पहले काम करो उठ करके पैसा हारो 4 घंटा सो करके ठीक है फिर उसके बाद रोज थोड़ा सा मूड तो खराब होता है पैसा हारने के बाद मूड आता है फिर उसके बाद रिसर्च चालू करो जल्दी खत्म हो गया ट्रेड ना पैसा हार लिया रिसर्च चालू करो टीम बनाने के लिए टीम 11 पे ठीक है रिसर्च चालू करो कोई तो है जो बहनचोद में उसको भूल गया अग्रवाल कोई तो करके है ना उसके वीडियोस देखो टीम बनाओ ठीक है एंड देन दोपहर खाने का टाइम आ गया खाना खाओ सो पहली बात तो दिस इज लाइक दिनचर्या बता रहा हूँ दिस नॉट मॉर्निंग रूटीन बट देन उसके बाद आया समय क्या बोलते हैं Dream11 आईपीएल देखो दांत अपना चबाओ और हारो पैसा हारो डॉग
पता नहीं क्या हो गया था उस समय ना, मतलब 400-500 रुपए तो कुछ भी नहीं लग रहा था मुझे अंधे जैसे। असल में वो टाइम पे मार्केट भी थोड़ा ऊपर ही था ना। ये टाइम पे देखो, मैंने हाथ खड़ा कर लिया, मैं बोला मैं नहीं करूंगा भाई ये सब, मुझे नहीं करना, ठीक है। तो मैंने टीम वगैरह सब बनाना छोड़ दिया है। लेकिन बैक देन लाइक अ ईयर अगो नाउ फ्रॉम नाउ ब्रो, लाइक आई वाज गैम्बलिंग लाइक अ मदरफकर। उसके बाद वुमेन्स बास्केटबॉल में लगा दो, कर्नाटका प्रीमियर लीग में लगा दो, ठीक है, केरला वुमेन्स लीग में लगा दो, सर्बिया के बास्केटबॉल में लगा दो, एमएलबी में लगाओ, फुटबॉल तो मैं देखता ही हूँ, फुटबॉल में लगाओ। ओ माय गॉड, जो मैं कर रहा था ना 3-4, जितना मैंने कम से कम 20-30 हजार तो मैं हार्ड ले रहा हूँ। 20 हजार तो मुझे लगता है मैं कम से कम हार रहा हूँ, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि 10 हजार तो मैंने एक बार ऐसे ही ऊपर ऊपर से काउंट करके ना डर डर के कर लिया था। एंड डे ट्रेडिंग में भी हारो पैसा। Those were the days, bro. Those were the fucking days to remember. You know what I mean? Damn, damn. I just don't get this thing ना कि उठने के बाद तुम लोग इतना ज्यादा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। लाइक मैं उठता हूँ 8:30 को एकदम, क्योंकि मुझे पता है मुझे 9:45 से काम पे अपने लगना है एंड शिट, यू नो व्हाट आई मीन। तो मैं उठता हूँ 8:30 को, 1 घंटे बाद अपने काम पे आदमी लग गया। अब मुझे 9:30 पे काम करना है, उसके लिए मैं 5 AM को क्यों उठूँ ब्रो, यू नो, does not make sense। and nor does those videos that just completely justifies the fakeness of these videos, you know what I'm saying। and हमने proof वगैरह भी देख लिया how fake those motherfucking videos are। खून खौलते देख करके उन्हें yes, but क्या ही कर सकते हैं, alright। But and the crazy thing is this, that is how these motherfuckers be getting money, bro। just engagement is all it matters। it doesn't matter लोगों को अच्छा लग रहा है गंदा लग रहा है। it matters कि लोग उस content पे engage करें उसको, you know like typing in a hate comment is a win for that guy, okay। Writing stupid stuff around that, you know what I'm saying, like within the video, and making people go through it and be like ये क्या लिखा है, pause करके, you know, that's a win for them, you know what I'm saying। okay, to close this motherfucker up, okay, tell me your morning routine, and tell me how many times you take that cold thing, you know what I'm saying, the mood डालने वाला system, and yeah, see you sooner than later, you know। See you sooner than later, all right, see you।